Uh, Hello everyone. I wholeheartedly welcome you to my YouTube channel, Data Engineering Concepts by नीलेश तिवारी। तो आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हम देख रहे थे डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू में आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये हम अपने पिछले पार्ट से के आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डेटा इंजेशन, एडीएफ और मेडोलियन आर्किटेक्चर, और हम आज उसके आगे का देखेंगे। तो आइए एक बार मैं क्विकली आपको गो थ्रू करा दूं कि हमने अब तक क्या क्या देखा है। हमने देखा है मेडोलियन आर्किटेक्चर, जिसमें हमने समझा कि ब्रॉन्ज लेयर क्या होता है और इसे रॉ लेयर क्यों बोलते हैं। फिर सिल्वर क्लींस लेयर या स्टैंडर्डाइजेशन लेयर भी इसे बोलते हैं हम। और इसके बाद हमारे पास आता है गोल्ड लेयर। अच्छा, गोल्ड लेयर में हम मॉडलिंग करते हैं स्टार स्कीमा, और इसमें इसके बाद पावर बीआई रिपोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था, और हमने कई सारी चीज़ें देखी थी कि हिस्टोरिकल डेटा टाइप स्कीमा, और ये सब आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि डेटा किस तरीके के सोर्सेस हो सकते हैं, मतलब कि जैसे अब डेटा तो मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंटरप्राइज। REST APIs, relational DB streaming, so those kind, ERP, data, cloud apps, ना. Then we have also seen कि how does ADF work. So ADF का काम क्या है? तो ADF बेसिकली यूज होता है कि मल्टीपल सोर्सेस को डेटा को ऑर्केस्ट्रेट करके ये एक ADLS कंटेनर में डाल देता है। ठीक है, और इसके का आगे का काम हम आज देखने वाले हैं। तो अच्छा, तो हमारा ये जो काम होता है यहाँ तक का, हम इसे लैंडिंग लेयर भी बोलते हैं। ओके, होपफुली यहाँ से आपको ये याद आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यस, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ तक तो लैंडिंग है और ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, तो प्रॉपर जो मेडेलियन आर्किटेक्चर बनता है गाइस, वो हमारा Azure Databricks में ही बनता है। ठीक है, और ये काम करता है स्पार्क पे। ये एक आप समझ लो कि इज अ यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट्स अपाची स्पार्क। ओके, अच्छा, इसमें गाइस हम क्या करते हैं कि जैसे डेटाब्रिक्स क्या क्या हैंडल करता है, तो डेटाब्रिक्स हैंडल करता है ब्रॉन्ज टू सिल्वर लेयर, डेटाब्रिक्स हैंडल करता है सिल्वर टू गोल्ड। ठीक है, और डेटाब्रिक्स ही हैंडल करता है गोल्ड टू सर्विंग। अच्छा, सर्विंग मतलब ये है कि जो भी पावर बीआई के लिए कंज्यूप्शन, अच्छा पावर बीआई तो एक यूज़ केस हो गया, बहुत सारे लोग आजकल AIML मॉडल्स में भी इसको यूज़ करते हैं डेटा को, तो वो भी हो सकता है यूज़ केसेस। अच्छा, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस क्या होती है, जैसा कि हमने देखा था कि ब्रॉन्ज में तो डेटा को हम एज एज इज रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ होने वाला नहीं है, ये एक नॉर्मल लेयर होती है। हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं और डेटा को जस्ट राइट कर देते हैं। ओके, अब सिल्वर में क्या करते हैं वो हमने देख लिया है, वो स्टैंडर्डाइजेशन क्लींस लेयर होता है। अच्छा, गोल्ड में हम स्टार स्कीमा इनफैक्ट मॉडलिंग करते हैं। अनदर क्वेश्चन इज कि डेटाब्रिक्स के और क्या क्या है, तो मतलब तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यू में पूछता है guys, वो है क्लस्टर्स और कंप्यूट। तो मतलब क्लस्टर्स क्या होते हैं कि वो या आप ऐसा रिसोर्स समझ सकते हो या वो मशीन समझ सकते हो जहाँ पे आपका एक्चुअल कोड रन होता है, जो कि मतलब कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो मशीन्स होती हैं जो आपके डेटा को रन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, वो हम क्लस्टर्स एंड कंप्यूट में देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास है दो तरीके के क्लस्टर्स बनते हैं, एक ऑल पर्पस होते हैं और एक जॉब क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑल पर्पस क्या होता है कि ऑल पर्पस जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर तरीके की यूज केस के लिए काम आ जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ओके, तो यस, ये तो ऑल पर्पस मतलब ये होता है गाइस कि ये हर तरीके के यूज़ में आ सकता है। कि जैसे अब यूज़ क्या हो सकता है, AIML यूज़ केस है कुछ, कोई डेटा इंजीनियरिंग का आपको रन करना है, कोई छोटी मोटी जॉब्स भी रन करनी है, तो इससे हो जाएगा। अच्छा, जॉब क्लस्टर क्या होता है गाइस, ये बेसिकली ये प्रोडक्शन जॉब्स को सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन जॉब्स को। ठीक है,
और ये जॉब स्पेसिफिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई जॉब्स हम बनाते हैं उसमें जॉब क्लस्टर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। होता क्या है गाइस कि जैसे ऑल पर्पस में क्या होता है कि ये जो है, जैसे एक बार आपने इसको स्पिन अप कर दिया, ठीक है, मतलब ऑन कर दिया, तो ये मान चलो 30 मिनट्स तक ये ऑन रहता है। या फिर इसमें भी हम टाइम सेट कर सकते हैं कि हम कितनी देर इसको ऑन रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उतना देर तक ऑन रहेगा, भले आप यूज़ करें ना करें। तो मतलब 30 मिनट्स तक आपका क्लस्टर ऑक्यूपाइड है एंड यू आर गेटिंग बिल्ड फॉर दैट टाइम। बट अब सोचो कि अब मान लो चलो कोई जॉब आपको चलानी है प्रोडक्शन में, वो एक बार चल गई, अब तो चल गई, उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स का कोई काम नहीं। तो इसलिए हम जॉब जॉब क्लस्टर्स बनाते हैं। तो जॉब स्पेसिफिक होता है, जैसे ही जॉब ख़त्म होती है तो ये जो है क्लस्टर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम, तो आपको जैसे पूछेगा तो ऑल पर्पस बोलना है हमने डेव में यूज़ किया, और इसे बोल देना है यूएटी या प्रॉड में यूज़ किया। ओके, होप इट मेक सेंस। फिर गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑटो स्केलिंग, स्पॉट इंस्टेंसेस। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केसेस हम इस चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ऑटो स्केल करना है या नहीं करना है। अ, फिर क्लस्टर पॉलिसी सेट कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कि मतलब इतना ही रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा देर तक चला तो एक मेल वगैरह ट्रिगर कर दे, तो उस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू। एंड इंस्टेंस पूल्स मतलब ये होता है शायद सर्वरलेस के लिए होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये इन तरह क्लस्टर लगभग 5 मिनट लेते हैं टर्न टर्न ऑन होने में, पर ये जो है तुरंत ही ऑन हो जाता है, स्विच ऑन इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, पर ये है कि तुरंत टर्न ऑन होकर तुरंत टर्न ऑफ हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि आप इससे थोड़ा जीपीटी कर लें, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डेल्टा लेक आपसे जरूर पूछेगा। सो गाइस दिस इज अ फॉर्मेट, डेल्टा लेक इज अ फॉर्मेट इन विच वी स्टोर आवर टेबल्स, वी स्टोर टेबल्स। ओके, अब ये सपोर्ट करता है एसिड ट्रांजैक्शन को। एसिड मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी ना। तो ये सारा चीज़ जो है एसिड ट्रांजैक्शन, जो एसक्यूएल टेबल्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं। और यही चीज़ जो है डेल्टा लेक में भी होता है। अब ये बिहाइंड द सीन ये पार के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये हमने लिखा नहीं था, बट ये है। अच्छा, एक चीज़ और, ये सपोर्ट करता है स्कीमा इन्फोर्समेंट और इवोल्यूशन, यानी कि जो भी इसमें डेटा होगा वो स्कीमा उसका वेल डिफाइंड होगा। और ये इवोल्यूशन मतलब कि टाइम के साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो ये इवॉल्व भी हो जाएगा। इसके लिए ऐसा नहीं इसे ड्रॉप करके दोबारा नया बनाना पड़ेगा। ओके, so these are the features of Delta Lake. I'm sorry. Yeah. So these are the features of Delta Lake. Okay, one of the most important thing is this time travel. Time travel means, for example, let's say today you updated a record. Now you want to see what was the record before the update. तो SQL टेबल में हम ऐसा नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या है कि हम पिछले वर्जन में जाके हम देख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब उसका डेटा कैसा दिखता था। तो इसको हमें इनेबल करना पड़ता है नॉर्मली, जिसे हम CDC बोलते हैं, चेंज डेटा कैप्चर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स न्यू वर्जन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एक मर्ज अपसर्ट तो होता है, ये सिल्वर लेयर पे सबको पता है। जी ऑर्डरिंग क्या होता है गाइस? जी ऑर्डरिंग एक डेटा स्कीपिंग टेक्निक है, ठीक है। तो इसे हम एक्सटर्नल टेबल्स पे हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास ज़्यादा फाइल्स एक्यूमुलेट हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू नोटबुक्स एंड वर्कफ्लोस। नोटबुक्स में क्या होता है? ये नोटबुक्स वही होते हैं जहाँ पे हम अपना पाइस्पार्क कोड लिखते हैं, उसी को हम नोटबुक कहते हैं और कुछ नहीं। फिर डेटा पे वर्कफ्लोस, वर्कफ्लोस का आजकल नया नाम आ गया है जिसे जॉब्स बोलते हैं। तो जॉब्स में हम क्या करते हैं कि इन्हीं नोटबुक को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम सेट कर सकते हैं टास्क डिपेंडेंसी, मतलब कि पहले कौन सा टास्क यानी कौन सा नोटबुक रन होगा, फिर उसके बाद कौन सा रन होगा, फिर उसके बाद कौन सा। तो इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैस्केड कर दें या फिर हम पैरेलल भी कर सकते हैं, ठीक है। होप इट मेक सेंस। अच्छा, एक चीज़ और है गाइस, यहाँ पे हम ऑन फेलियर, ऑन सक्सेस
ईमेल्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑन फेलियर आप बोल सकते हो कि जॉब्स पे हमने ऑन फेलियर पे हमने ईमेल ट्रिगर किया था। अच्छा, ये हो गया। फिर गाइस क्या आता है, यूनिटी कैटलॉग। तो यूनिटी कैटलॉग गाइस क्या है, एक डेटा गवर्नेंस टूल है, ठीक है, मैनेज्ड बाय डेटाब्रिक्स ओनली। इसमें होता है सेंट्रलाइज मेटास्पेस फॉर 3 लेवल नेम स्पेस को सपोर्ट करता है। मतलब पहला नेम स्पेस होगा कैटलॉग नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारा एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट इसमें किसी को एक्सेस नहीं मिलता है until unless he is the owner of that metas he is the owner of the catalog. I mean, owner means he is the one who has created that catalog. Okay, then we can implement column level, row level security, implement masking, track lineage, okay, and audit logs. So all of these things, table level controls, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। Okay, let's move to our next topic. So guys, one of the important thing जैसे हमेशा आपसे पूछा जाता है कि वर्जन कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आपसे जो है इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपने कैसे नोटबुक्स को डेवलप किया था। तो प्रोसेस वही होता है कि हम गिट को इंटीग्रेट करते हैं, गिट या फिर अज्योर डेवऑप्स ही होगा मेजरली, क्योंकि हम सारा बात अज्योर में कर रहे हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गिट, इट्स गोइंग टू बी अज्योर डेवऑप्स हियर, बट सेम थिंग। सो विल कनेक्ट ADF टू अज्योर रिपोस, ठीक है। All pipelines will be stored in JSON and repo. Branch strategy हमेशा ये होगी, dev will be your main, dev will be your branch। फिर वहाँ पे हम फीचर ब्रांच को कट करेंगे, फिर उसको मर्ज करेंगे और फिर ये dev से मेन में जाएगा, मेन से ये अपना UAT और UAT से ये prod, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है और ये पूरी होती है CI/CD पाइपलाइन। इसी के बीच में अच्छा, पुल रिक्वेस्ट हमने रेज किया था, जब भी कोई चेंजेस किया तो हम पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो उसके बाद इसमें होता है पीयर रिव्यू, आपका लीड या फिर आपके सीनियर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है डेव में मर्ज हो जाती है। फिर डेव के बाद यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन चलेगी जो इसे मेन में मर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन का रोल होता है। सेम चीज़ का ये डेटाब्रिक्स में भी ऐसे काम करता है। रिपोज को हम इंटीग्रेट करते हैं नोटबुक से, फिर से वही फीचर ब्रांच लेते हैं, फीचर ब्रांच को मर्ज करते हैं डेव में, और फिर डेव को फिर डेव ऑटोमेटिकली मेन में मर्ज होता है और उसके लिए CI/CD पाइपलाइन। तो इससे क्या होता है कि वर्जन हिस्ट्री और रोल बैक कैपेबिलिटी, और हम ये भी जाके देख सकते हैं किसने क्या चेंज किया है इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, ARM टेम्पलेट क्या होता है। ARM टेम्पलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी में हमारा कोई भी हमारा जो भी रिसोर्स होता है पूरा ADF का, वो इसी में डिप्लॉय होता है। तो जैसे भी डिप्लॉयमेंट होगी वो ARM टेम्पलेट से ही होगी। तो अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि डिफाइन करता है सारे Azure रिसोर्स को एज अ कोड। ये नॉर्मली JSON में होता है, ठीक है। और वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे लिंक सर्विस हो सकता है, डेटा सेट्स हो सकता है, सारे पाइपलाइंस होगी, ठीक है। इसके बाद गाइस डेटाब्रिक्स को डिप्लॉयमेंट के लिए ना हम डेटाब्रिक्स एसेट बंडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पूछे तो आप बोल देना हमारी डेवऑप्स टीम थी, दे यूज टू हैंडल ऑल दोज सिनेरियोस, सो वी आर नॉट द पीपल। अच्छा गाइस, कोई भी की होती है, जैसे कि क्रेडेंशियल्स जिसको हम बोलते हैं, किसी SQL सर्वर से कनेक्ट करना है, मान लो ADLS को डेटाब्रिक्स के यूनिटी कैटलॉग से कनेक्ट करने हैं, एक्सटर्नल लोकेशंस बनाने, तो उन सारे के सारे जो कीज़ होते हैं वो हम हमेशा आज्योर की वर्ल्ड में स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा बोलनी, क्रेडेंशियल्स आपने हमेशा आज्योर की वर्ल्ड में स्टोर किया था, ओके, ठीक है। इसके बाद Azure पाइपलाइंस कैसे डिप्लॉय होती हैं, वो CI/CD, इस बात को आपको ज़्यादा नहीं। फिर पैरामीटराइज्ड करते किया था हमने, ठीक है। पैरामीटराइज और ऑलरेडी भी always भी पैरामीटराइज और पाइपलाइंस। So that way guys, this is Git integration part. This actually tells by asking the question on Git integration, interviewers actually wants to know whether you have actually worked on a project or not, because that
That way they identify the best practices that you have used the project. Okay. Now let's come to the one of the important thing, jobs monitoring and alerting. So one of the important part of our work is jobs monitoring and alerting. Even though since our pipelines, since our pipeline runs 24 by 7, no one can monitor, right? We need some sleep. Okay. So for that reason, we implement monitoring and alerting. Okay. So ADF monitor. So normally we use logic apps to send the alerts for ADF orchestration pipeline failure. Okay, pipeline failure. So that concerned people, we give the emails and it sends the alerts saying that a pipeline failed for so and so reason. Then one of the important thing is, guys, we can also implement log analytics workspace, and we can connect ADF and Databricks. Normally we only connect ADF to log analytics. It is again I think product of Azure only. Okay, in which we can run KQL queries on all the activities, and we can in depth check the pipeline for failures. Okay, and custom dashboards integration with application insights. Don't tell anything on this part. Let's leave it for now. Okay, and how about the alerts on Databricks? So as I already mentioned that jobs schedule when we create jobs in Databricks, they have built-in option to built-in. I'm sorry, built-in built-in option to send the email. Okay. अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें हम टीम या स्लैक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं लॉजिक ऐप से। ये सब फीचर्स है गाइस, बट नॉर्मली प्रोडक्शन में हम ये सब नहीं यूज़ करते हैं। I haven't ever never used, so I would say कि it's better not to talk about this one. If they ask, say that it is possible, but say that I never worked on it. Okay. अलर्ट सिंह हमें क्यों चाहिए, ताकि हम पाइपलाइन फेलियर को हमें मेल आ जाए और हम उसे टाइम पे उसे हमेशा चेक कर लें. ओके. So data quality checks, important thing. We implement data quality checks. Uh, so what to check and at what layer? Okay. Completeness means no unexpected nulls. Accuracies means, for example, um, uh, some date range, some age range. Na? No one can have age more than 150, I guess. Consistency range, right? Freshness and uniqueness. So all these things we need to check, and also plus business data quality checks. Okay. So this is the most important thing that we do in our data engineering projects. Let's see what we did, what we do, and what layer. So for at the bronze layer, we implement schema validation. Schema validation means at the source, as I said, we have many sources. So they are, sorry, many formats. So we implement it in a, so we explicitly define schemas and all to hold them. We also implement some null over the primary key. So it is expected that we cannot have null at the primary key. So that basic check we also do. File completeness, so whether the file is correct or not. So those things we do at this layer. At silver, what we do, referential integrity, deduplication means if any duplicate record has came here, it's highly possible that duplicate records may have come because it's always an append. Okay, so deduplication is important thing. फिर typecasting, फिर
Schema enforcement is also done as this layer to standardize them. And yeah, next last will be your DQ business checks. Okay, so all business rules will be here. like KPI thresholds, SLA. So we'll do all this on the data contract checks, DVD test. So grade expectations, delta constraints. So database DQ for that's all we use. For ADF, we are not much worried on this. If you want, you can at least get the row count, but this is just for an informational purpose. Now let's move toward the final layer. This is gold layer. Sorry, gold layer. So at the gold layer, guys, we we have facts and dimensions. Okay, facts come from transaction tables. Okay, and transaction tables have some measures. For example, student enrollment. Okay, student enrollment is a transaction table. Why? Because it has enrollments. Every student enrolled is a transaction. Okay, uh, but let's say we have a student details. Do you think it's a transaction table? No. It strictly holds a details information about student, not a transaction. So whether a student has been enrolled in institution or college it will come in student enrollment, and for this we'll need a fact. For student detail we need a dimension. Okay. So guys, in that way uh, we create a star schema. So why we call it star schema? Because at the center we have fact and multiple dims, 1, dim 2, dim 3, and dim 4. Okay, all connect together. For example, dim date, dim customer, dim location, dim product is connected to this fact. Okay, sometimes we may require bridge tables. Obviously, we always required bridge tables are required to resolve the uh, many to many relationship between uh, between fact to dimension. Okay, so you can say if they ask have you used bridge table, say yes, and for what purpose, say that to resolve many to many relationship between the fact and dimension. Okay, hope that makes sense. What else? uh, yeah, so fact tables are basically derived from transaction tables, and dimensions always hold the attributes. And one more thing, it is always SCD2, and you can say it was also SCD1. So if they ask you what layer, uh, because see it makes logic to have a transaction table as a CD1, because you know transactions happen and no point of having it as an history, because any transaction is not going to be updated. It will be going to a new transaction. For example, if you are sending some payment and it got failed, then it's got failed. Okay, then you have to make a new transaction, a whole new. So whether it got failed or succeed, that is another part, but it always going to be a new one. But what about dim product? Let's say some product has some uh, uh, as name something like A, later you change B, so that product only getting up, its name is getting updated. Okay, so that way it's not going to be a new product, it's just an update. So that's why we need an history to track when was the name A and when it got changed to name B. So that's why we need SCD2 over here, and in fact we need SCD1. Hope it making clear to you. If not, and so the guys, this is our last layer, and this is used for Power BI reporting. Okay, and from here onwards, our role ends. So as a DE data engineer, your role ends here. Power BI role people role starts. Okay, so what all the things we have covered, and I have also prepared a
cheat sheet for you. Okay, and what are the key points you can always tell in the interview, so that even if you miss something, but if you talk on these things, probably they will get to know that you have actual real experience, and you can always learn new things as required. Okay, so let's see what are these. How so? We always explain idempotency, immutability, which I already explained, to preserve the history and all. Delta Lake merge in silver layer and SCD2 implementation, aggregation in gold star schema modeling. You can mention idempotency means uh, if you are running a pipeline in bronze layer, it should not affect the your pipeline in silver layer. However, times you run in bronze. Okay, so make sure they are not interdependent. Okay, in ADF, it's the most important thing. Sometimes they ask you how you created the pipelines. Okay, so you can like you use for each and lookup pattern. So for example, you read the meta table through lookup activity and then pass that information in a for each activity, uh, and then iteratively you call the copy activity and load that table and orchestrated that table. Okay, so that way, which I already explained in the part one, you can refer to that, but always yeah, always explain. Monitoring, you can always say KQL on log metrics enabled on the ADF level. And for Databricks, we on jobs itself we triggered we enable monitoring. Okay, there is an inbuilt function you can always refer to. Then star schema modeling, most important. Bridge tables always say to resolving many-to-many relationship between fact to dimension. Guys, always note fact to dimension. Okay, confirm dimension. Confirm dimension are those dimension which are used in multiple fact tables, and indirectly they make the relationship between two facts. For example, let's say fact 1, sorry, let's say we have a fact 1, fact 2, and there is a dim uh, that is shared here. So it establishing the relationship. So that way, this is a drill power in Power BI. You can drill it through this dimension. You can come here, you can come here, you can change the grain. So that is, but that is not our job, but you should know about it. So this is a Power BI role. Okay, always say that all the pipelines were metadata driven, watermark based approach for incremental loads. Okay, yeah, CDC change data capture, you can say either or not, that's fine. Always say that ADF publish branch ARM parameters, Git integration, dev, UAT, prod, use this terminology always. Grid expect, always mention that expectations, DQ checks that we talked about. I did not talk in detail, but yeah, still you can say like completeness, accuracy, consistency, timeliness. What they could be, something like schema validation, null over primary key, file completeness. Deduplication is the most important thing which we talked about. Why? Because at the bronze layer we are just appending, so we may run our pipeline multiple times, so it most likely it can have a duplicate data or duplicate files. Okay, then we have aggregation, business rules we apply over here. Hope that it all makes sense. And so this is all about the interview. Now let's take a look at the complete Azure platform end-to-end architecture. So now whatever we have talked about, I have finalized into an architecture. You can always share if they ask you to create an architecture. You can use this either as a screenshot, and you can always use this directly to explain. That's perfectly fine, and it's very robust. So let's say you have a source systems like customer source system like SQL Server, Info.ln, REST APIs, blob files, event hub, let's say SAP. Okay, and now you are using. So first of all, we need ADF to orchestrate data into the multiple sources, right? That we already explained. So ingestion orchestration is done by ADF, and then we put them where at the landing container. Okay, so this is going to be your landing container. Okay,
तो आपको यहाँ पे लैंडिंग कंटेनर रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि ADLS पे हमने यहाँ पे डेटा को डाल दिया है, एंड देन द रोल स्टार्ट्स ऑफ डेटाब्रिक्स। ओके, इन द ब्रांच लेयर, यहाँ से हम इसको रीड किया, फिर डेटा को यहाँ भेजा और यहाँ से पावर बीआई में। ओके, तो Azure Databricks सारा हैंडल करता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिक्यूरेशमेंट। फिर कंज्यूम कहाँ कहाँ होगा, तो पावर बीआई एक, सिनेप्स एनालिटिक्स नहीं होगा, notebooks ML definitely, and Azure SQL no, it's not good. App API layer, so these three could be your consumption layer. Hope guys it makes sense. What are the monitoring tools we have? So Azure Monitor you can always mention log analytics workspace and Databricks job monitoring inbuilt functionality. Refer to it. Okay, just mention only three. Yeah, you can always use Azure Monitor Hub. Uh, this is, I think this is applicable for, I would say you can Google it for more on this. Maybe later I'll create a video on that too. But for now, you need to mention the log analytics workspace, Databricks job monitoring, Azure monitoring. That's it. Because we'll have less time, so just mention these three. Okay, and yeah. So guys, this is the end of our lecture part 2. होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आपको जितना से जितना हो सके मैंने आपको रियल टाइम में हम क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे काम करते हैं वो सब बताया है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको अपने इंटरव्यू देने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। गुड डे, सी यू सून।